So here we will be discussing about top 10 tips for etiquette which we can use on our daily basis. That means top 10 tips for etiquette for everyday life. So we are going to discuss the top most talked about etiquette which you should also practice on a regular basis. So let's begin with the very first tip. The very first tip for everyday etiquette is do not forget to write thank you notes. That means if you are writing somebody or else somebody has given you anything, do not forget to say thank you in written. If somebody has written a letter for you, you can write a thank you note. If somebody has said good about you, you should say thank you. So thank you is a thing or is a phrase which you should use very often. बिकॉज जब भी हम थैंक यू की बात करते हैं तो थैंक यू कहने से आपका कुछ भी कम नहीं हो रहा या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज से थैंक यू इन रिटन इफ समबडी हैज सेड गुड अबाउट यू, या किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है या किसी ने आपको कुछ अच्छा दिया है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए. ग्रैटिट्यूड शो करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जब आप इन रिटर्न थैंक यू बोलते हो, तो जिस पर्सन ने आपके लिए जो किया है या आपको कुछ भी अच्छा प्रेजेंट दिया है, वो पर्सन बहुत अच्छा फील करेगा अबाउट द सेम थिंग. सो ये एटिकेट्स का तरीका है और ये एटिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एवरीडे फॉलो करना चाहिए. वो ये कि जब भी कोई आपके लिए कुछ भी करे, छोटी सी हेल्प करे या आपके लिए कोई भी फेवर करे, you should always say thank you in written. It will bring a smile on their face as well as you will also feel good about it that somebody has done something for you and you said thank you in written. So always say thank you and write thank you notes, and this is a rule of etiquette. Tip number 2. Now tip number 2 in rules for etiquette or tips for etiquette for everyday life talks about that handshakes are an important. That too, it depends upon the situation whether you want to give that handshake a warm handshake or firm handshake. But handshake plays a very important role while you are interacting. So according to etiquette's rule, you should always opt for a good handshake depending upon the situation and the person you are interacting with. यानी कि जब भी आप किसी से हैंडशेक करते हो तो सिचुएशन को और पर्सन को हमेशा माइंड में रखो कि ये पर्सन कैसा है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है. उसी टाइप से आप वार्म हैंडशेक देना पसंद करोगे या फिर फॉर्म देना चाहिए. सो यू शुड ऑलवेज टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन बिकॉज आपका हैंडशेक आपका फर्स्ट टच होता है टू अ सेकेंड पर्सन. सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज ऑन मेंटली एंड इमेज वाइज ऑल्सो. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक हैंडशेक करने जा रहे हैं तो आपका हैंडशेक इट शुड नॉट बी टू हार्ड एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि आपको उस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, you are just doing it for the sake. It should not be like that. It should be very welcoming in nature. Although हो सकता है कि आपको वो person genuinely ना भी पसंद हो, but your handshake should not tell this, right? Because this is not a part of etiquette. As a good etiquette holder, you should always focus on your good handshake. That means it should be warm, welcoming in nature. And if you are going for a professional meeting or likewise, then it should be firm, which shows that you are a very confident person and you are here to break the deal. So your handshake says a lot about you. So please keep focus on your handshake and always opt for a good handshake. Tip number 3. Now tip number 3 in top 10 tips for everyday etiquettes talks about your hygiene. That means you should always maintain a good hygiene. This is for everyday purpose. See, every individual needs to follow a proper hygienic method and proper hygienic lifestyle because it is important not for others but it is equally important for oneself also. When you feel good about yourself, तो आप सामने वाले को वाइब्स भी वैसे ही दोगे, गुड वाइब्स. And if the other person will receive good vibes from you, he will feel happy about you,
right? So it is important to maintain a hygiene, because obviously if you are an unhygienic person, nobody would like to talk to you. ये तो पहली चीज होगी ही होगी. Secondly, people will try to avoid you. This will be like worst. People will make your image as negative. वो भी अच्छी चीज नहीं है. एट द सेम टाइम आपको खुद को भी आप पसंद नहीं आओगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होगा. And as a etiquette purpose, if I talk about, then hygiene is like something which everybody should think of. Because अगर हम बात करते हैं एटिकेट्स की, मैनर्स की, तो अगर आप हाइजीनिक पर्सन नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि हाइजीन मेंटेन कैसे करते हैं, देन सॉरी, यू आर नॉट एट ऑल ऑन गुड बुक्स एंड आप एटिकेट्स में बहुत फेल होते हो. तो दैट मीन्स अगर हम एवरीडे एटिकेट्स की बात करें, तो फॉलो अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर रूटीन दैट इज हाइजीनिक इन नेचर, क्लीन इन नेचर एंड प्रिसाइज इन नेचर. हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेल्फ इमेज और एज वेल एज आपके परसेप्शन में, जो भी आप परसेप्शन सामने वाले पर बना रहे हो. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू बी हाइजीनिक एंड बी हेल्दी एंड कीप स्प्रेडिंग द लव. Tip number 4. So now, when we are talking about top 10 tips for everyday etiquette, let's talk about tip number 4. So tip number 4 says that you have to be a punctual person. That means don't be too late and don't be late wherever you are going. That means if we talk about the etiquette which you have is to be a punctual person, because when you are punctual, you achieve everything in life and people will perceive you as a very disciplined person and they will create an image that you are a person who values time, emotion and people as well. So it is important that you should be punctual and you should never be too late to any occasion. सो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि नेवर बी टू लेट और पंक्चुअल, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की बात की गई है कि हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपने टाइम को वैल्यू दें, और किसी ने अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे बुलाया है तो उसी टाइम पे पहुँचें. आप मीटिंग में जाना है तो टाइमली जाएं, कोई भी आपको काम करना है तो टाइमली कंप्लीट करें. जो लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या फिर अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते, जनरली लोग उनको सिंसियर नहीं मानते हैं और कभी भी सीरियसली नहीं लेते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वैल्यू टाइम, बिकॉज एवरीबडीज टाइम इज प्रीशियस व्हेन वी टॉक अबाउट योर टाइम और समबडीज एल्स. तो किसी के ना टाइम को आप वेस्ट करें और एट द सेम टाइम उस चीज़ को भी कंप्लीट करें जो भी टाइमली कंप्लीशन मांगा गया है आपसे, जो कि दिखाएगा कि आप कितने इफेक्टिव और एफिशिएंट हो. So in order to be effective and efficient, you need to fulfill certain time limits and you have to value the time. So it is advisable that you should be on time and you should be punctual in order to learn an etiquette or a manner, and it will make you a better person every single day. Tip number 5. Now tip number 5 talks about cell phone manners. That means you should have some manners that how to use a phone and how to talk to somebody if that person is using their phone or cell phone or mobile phone. Because in this era, it is very much advisable that you should have these etiquettes. Because nowadays what happens when you disturb somebody without their permission and while they are speaking on phone, they can feel offended and they will say or they will consider you as an ill-mannered person or less mannered person. So it is advisable that you take care of certain cell phone manners. That means if somebody is talking on phone, wait for them to complete that talk. Or if somebody is on phone and you want to say something which is very much urgent, then you can just ask them, excuse me, can I talk to you for a second or for a minute? Then जस्ट गो अहेड. बिकॉज अगर आप एकदम से किसी के कॉन्वर्सेशन में घुस जाएंगे या उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे, मे बी दे आर टॉकिंग सम पर्सनल थिंग, मे बी दे आर टॉकिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग, or maybe they might not like it that you are just poking your nose in between their conversation, or maybe they'll consider you as like कि आप चुपके से उनके conversation सुनने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी देर से. तो it is always advisable that you wait for the person to just finish their talk.
एंड अगर कोई भी पर्सन अपने फ़ोन में मैसेजेस सेंड कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, do not peep into somebody's phone. This shows that you do not have manners, because everybody has their personal own space and you cannot enter in anybody's space without letting them know or without even their permission. So always keep in mind that if somebody is on phone, you ask for their permission in order to talk to that person. Tip number 6. Tip number 6 talks about being a helping hand or be kind. Kindness costs nothing, absolutely nothing. So, if you can be kind to anybody and if you can be a helping hand, then nothing better than that. Trust me. जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो उस पर्सन को तो अच्छा फील होगा ही होगा. एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो फील गुड दैट यू हेल्प्ड समबडी, यू आर काइंड टू समबडी. और इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है. I mean, nobody is charging you any penny to be kind or to be a helping hand, but it will give you immense happiness. And I think everybody is searching for happiness in their own manner. So, if somebody is in need of something, अगर आपने उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी, he will say thank you from their heart and it will make you so happy. At the same time, they will also consider you as a very well-mannered person because you offered a helping hand to them. और इससे आपका I don't think so इससे आपका कोई लॉस भी होगा. So you can go ahead and help a person if they are in need. हेल्प करने से कुछ नहीं होता. In fact, उस पर्सन को तो अच्छा लगेगा ही आपके बारे में, आपको खुद को अपने बारे में बहुत अच्छा लगेगा when you help somebody. Be kind, be polite and just provide help if they need any sort of help. Because see, it's a gesture. It's a gesture that you are considering somebody important. और जब उनको ये पता चलेगा that you took out some time और you have prioritized that person अपने काम के अगेंस्ट, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से मैनर्स है कि हाउ टू वैल्यू समबडी, हाउ टू हेल्प समबडी and how to respect somebody. So it is a very good thing to do to help somebody. So go ahead and be a helping hand. Tip number 7 for every day is to respect everyone. I don't think so that this point need more elaboration. It is itself a very big statement. Respect, which everybody wants in this world. चाहे वो रिस्पेक्ट हमारा टुवर्ड्स ह्यूमन हो, टुवर्ड्स एनिमल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनीथिंग, एनीबडी, everybody deserve a respect and everybody wants to give respect and wants to receive respect because it is an act of kindness. It is an act which shows that you value the person. You know that how much important it is to give the respect to person, because when you will give respect, in return you will receive respect, which will make you more happy. So do not insult anybody anyhow. If you do not like the person, you can just ignore or avoid that person conversation instead of disrespecting them, because your disrespect towards them may lower down their morale or may lower down their self-esteem. So you need not to disrespect somebody in any manner. If you really don't want to just talk to that person, you can be quiet and just avoid getting involved with that person. But you need not to make them or him or her feel low or every time disrespected, because this will break them. At the same time, they will consider you as a very less mannered person, that you do not have even etiquette how to respect somebody. So respect is like a very important thing in etiquette, and it is the foremost first important thing which you should learn. Not because of any professional personal, everywhere you should know how to respect each and everybody, being a living or non-living object, but you should respect everybody and everybody's emotion and feelings. Tip number 8. Now tip number 8 talks about your eating habit. That means how you eat and how you perceive others while they are eating.
So, eating is something which you require in order to learn etiquette for everyday life, because obviously you eat every day and you need to eat every day, and at the same time, everybody around you is also eating. So, there are some manners, there are some etiquettes which you should learn while going for this habit. Like, you are going for this habit, but while making this habit as a more mannerful person and as a more etiquette holder, right? So you should know that how to eat, how to just proceed with all the things, how to respect somebody on table, how to treat food. Like, let's suppose somebody has served you something which you really do not like it, but you are at somebody else's place, then how to say that you do not like, but in that manner जिसमें उसको बुरा भी ना लगे और उसको ये बात भी समझ में आ जाए that you do not like a particular dish. So there is a way you should appreciate everybody's food. If somebody has made a food for you, you should say thank you. You should wait for everybody to start eating. It's not that कि बस बैठे और आपने खाना स्टार्ट कर दिया, दूसरों ने स्टार्ट भी नहीं किया है. You should always use napkins अगर आपको ज़रूरत है तो. Do not just eat in any social gathering with your hands. You can use fork or knife or spoons. ऐसे जैसे आप घर पे खाते हैं, you need not to follow that routine there also, right? वेट फॉर एवरीबडी टू फिनिश. इट्स नॉट दैट कि बस आपने खाना खा लिया और आप उठ के चले गए एंड सब खाना खाते रहते हैं. नो, दिस इज नॉट अ मैनरफुल थिंग. So there are some of the eating habits, prominent eating habits. We'll be discussing them brief later on. So you should maintain this eating habit on a regular basis. Tip number 9. Now, tip number 9 among top 10 tips for everyday etiquette talks about that keep your personal life very personal, or keep your personal stuff to yourself. See, it is a very important etiquette. Sometimes people do not even consider this as an etiquette. उनको लगता है अरे ये कोई सीखने वाली बात थोड़ी ना है. But trust me, this is a very, very important etiquette everybody should have, because sometimes without even considering anything, लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं. और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही नहीं रखते. दे विल जस्ट मेक एवरीथिंग like public. So it is not required, and it is not a good sign of etiquette, because everybody has a right to have their personal space. ना आप किसी के पर्सनल स्पेस में एंटर कर सकते हैं विदाउट देयर परमिशन, और ना ही किसी को अलाउ करिए कि वो आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करे विदाउट देयर परमिशन. एट द सेम टाइम अपना जो भी पर्सनल स्टफ है वो अपने साथ ही रखिए. दैट मीन्स कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट सामने वाला पर्सन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर टॉक, बट यू आर जस्ट saying and you are just like making that person feel annoyed or irritated by your talks, and that too personal. Maybe that person is not at all interested in listening to your personal stuff. So always try to keep your personal stuff with yourself. And personal stuff can be materialistic things also, like your personal belongings. So जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है अगर आप उनको अपने साथ रखोगे तो इट विल बी गुड थिंग. People will appreciate and people will say that you have manners and you know how to distinguish between personal space and professional space. So it is advisable that you learn certain aspects of keeping things personal, being those things emotionally, feeling wise or materialistic, but keep your stuff to yourself. Tip number 10. So, last but not the least, this is a very important tip for everyday etiquette, which is you should not forget to introduce yourself at a very first meeting. It says that whenever you meet somebody in a professional front or on a personal front, you should always introduce yourself. Introduction थोड़ा vary कर सकता है personal और professional या formal और informal के type से, but आपका जो भी इंट्रोडक्शन है वो रहना चाहिए. जो भी कॉल आप जो भी चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में बात करिए, उस लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एडवाइजेबल दैट यू ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट. बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी सामने वाला पर्सन है वो आपको एक्चुअली जानता ही ना हो और वो
आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी बट वो यही अज्यूम करता रहे दैट हु यू आर, आप कहाँ से आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉक एंड सो ऑन. So it is advisable that you focus on the introduction round first. Let's suppose अगर आप informal meeting में हो, यानी कि आप अपने friend की birthday party में गए हो और उस friend के और भी friends आए हुए हैं, तो you should always introduce like, hi, I am so and I am friend of this person whose birthday like is there. तो सब लोग आपको वैसे ही ग्रीट करेंगे. इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशनल फ्रंट, यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लाइक, हाई, आई एम जॉन एंड आई एम अ मार्केटिंग हेड ओवर हियर एंड आई एम गोना रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टॉपिक. बट यू शुड इंट्रोड्यूस, बिकॉज जब हम अपने आप को इंट्रोडक्शन दे देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट गो, तो जब जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है फॉर्मल या इनफॉर्मल गैदरिंग में, वो हमारे लिए एक इमेज, एक परसेप्शन बनाना अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू आवर इंट्रोडक्शन. एंड जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं अच्छे से, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती रहती है ऑडियंस के माइंड में कि हम कहाँ से आए हैं, पर्पस क्या है एंड सो ऑन. सो डू नॉट क्रिएट दैट कन्फ्यूज़न इन एनीबडीज माइंड. एंड वो एक अच्छा एटिकेट भी नहीं है. एक अच्छे एटिकेट के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस खुद करें कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी बीइंग हियर. So always introduce yourself first. I hope these top 10 tips will help you in learning everyday etiquettes, because they are highly effective and they are highly required in order you to make a good impact on the society.